हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरा नाम है सचिन। आज हम करने वाले हैं GoPro 8 का अनबॉक्सिंग वीडियो। तो बिफोर स्टार्ट द अनबॉक्सिंग वीडियो, फर्स्ट आई विल टेल यू हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। और ये दिवाली में मेरे लिए दो सरप्राइज है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं GoPro 8 फाइनली परचेज किया एंड दूसरा सरप्राइज है, फाइनली आई फाउंड यूट्यूब चैनल नेम। अर्लियर आई गिव द यूट्यूब चैनल नेम सचिन तारिक ब्लॉग्स, which is good actually, but I was searching for some different name, so that's why final name is the Travel Now. चलो स्टार्ट करते हैं GoPro 8 का अनबॉक्सिंग वीडियो। GoPro 8 एडवेंचर किट है एक्चुअली, और ये मैंने फ्लिपकार्ट में परचेज किया था इस दिवाली में। तो मुझे ऑफर में अच्छा खासा अमाउंट में मिल गया था। ये रहा GoPro 8 ब्लैक विथ एडवेंचर किट। इसके साथ ये जो है, ये है इसके साथ एडवेंचर किट है जो इसके साथ इंक्लूड होता है। एक हेड माउंट है और एक हैंड माउंट है जो वाटर भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा एक बैग माउंट है जो मतलब पेन के साइड में लगा सकते हो, तो ये कर सकते हो। यदि आप ये सेपरेटली खरीदते हो तो इसका आई थिंक कॉस्टली 4000 प्लस होता है। इसके साथ एक केस बैग भी देता है जो आप आपका GoPro सेफली रख सकते हैं। इसके साथ एक केस बैग देता है जो GoPro सेफली रखने के लिए। ये हेड माउंट है और इसको आप साइड से लगा सकते हो जिसमें आपका GoPro बैठ सकते हैं, और ये ब्लॉगिंग के लिए भी यूज सकते हो स्मॉल वाला। GoPro को अनबॉक्सिंग करते हैं। GoPro एक्चुअली 4K में आता है, 4K शूटिंग करता है 180 पिक्सल है, और जैसे हाइपर स्मूथ 2.0 है, मैट है। इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं, देख सकते हैं। इसमें टाइम स्लैप्स है, और इसके साथ एक साल का वारंटी भी देता है। एक्चुअली ये खरीदने का मेरा मोटो ये था कि मुझे मोटो ब्लॉगिंग करनी है। मैं बहुत जगह जाता हूँ घूमने के लिए, चाहे ट्रैकिंग का है या उनके बाइक पर राइडिंग के लिए, तो इसलिए मुझे ये करना है। इसके साथ ये कुछ पेपर है जो आप रजिस्टर कर सकते हो, आपको डिस्काउंट मिल सकता है। जॉइन दी ट्राई।
setup GoPro 8 Black Adventure Kit। एडवेंचर किट लेने में ये फायदा है, आपको एक कवर मिलता है, बहुत सारी चीज़ मिलता है। अभी हम इसके साथ हम ऑर्डर किए हैं SD कार्ड जो 128 GB का है, तो इसको भी ओपन करके देखते हैं। सेंडिक्स का ऑर्डर किया हम, ये SD कार्ड है सेंडिक्स, ये SD कार्ड है सेंडिक्स का 128 GB का, बहुत अच्छा क्वालिटी का है।